गुड इवनिंग एवरीवन। एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट we will discuss something, then we'll solve the quiz which I posted in the morning. So let's discuss little bit about the liver chi stagnation plus liver chi contravention. अभी तक हम liver chi stagnation की बात कर रहे थे. When the person is having liver chi stagnation, having pain in the hypochondrium means below the ribs, व्यक्ति को रिब्स के नीचे दर्द होता है, यहां पर बिलो द रिब्स, टाइटनेस इन द चेस्ट, लंप इन द थ्रोट, और डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, and even some indigestion, gas. We discuss these all things. Because liver chi get stagnant, it doesn't allow flow, so lung chi cannot go downward, and so and so. So when the person is having liver chi stagnation, we are doing the treatment of our very simple formula. What is our formula? The formula to cure liver chi stagnation, in this formula, pericardium 6 will be removing the stagnation from abdomen. Triple warmer 6 will remove the stagnation from ribs and chest. Liver 14 will remove the stagnation from liver, because liver 14 is the alarm point of liver. Then liver 3 will make the free flow of energy, free flow of liver chi. Then gallbladder 34 will remove the stagnation from this part. Someone is having pain in this part on the lateral side in the gallbladder meridian. So gallbladder meridian will remove. Even the person is having pain on the side of the ribs, पसलियों में जो दर्द है साइड में, फ्लैंक में जो पेन है, the pain of the flank. And liver 13 is also very important point for liver. If you know what is influential point, then you will understand the liver 13 is working for all yin meridian, whether the liver or the spleen or the kidney or the pericardium or the heart. Liver 13 is the influential point for all yin. So liver 13 we also taking here. So this is a very wonderful formula for liver chi stagnation. Now, when liver energy is not flowing freely, it is called chi stagnation. But when the liver chi attacking somewhere, that is called liver chi contravention. थोड़ा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया है. So when liver chi is attacking on some part, that's of the body. आपको याद लिखे होंगे. Invasion of liver chi, or you will see liver chi invading
और लिवर ची कॉन्ट्रावेक्शन और रिवेलियस लिवर ची, ऑल द मीनिंग आर सेम, कि भटकी हुई लिवर की ऊर्जा भटका हुआ आदमी, भटकी हुई आत्मा। So now it will, because liver chi generally going in the upward direction and outward direction. So liver chi can go upward, liver chi can go horizontally, liver chi can go even outward, downward, but most important upward and outward. So now when we talk about the liver chi contravection, so first liver chi get stagnant, then invading stomach, or invading somewhere else, like we have discussed earlier, invading stomach or invading spleen, liver chi, or invading intestine, or liver chi is invading uterus. The question comes, how liver chi will decide where to invade? लिवर जी ये कैसे डिसाइड करेगी कहां आक्रमण करे, कैसे करेगी बताइए? हाउ द लिवर ची विल डिसाइड वेयर टू अटैक? कैसे लिवर ची ये सोचेगी कि मुझे स्टमक पर अटैक करना है कि इंटेस्टाइन पर अटैक करना है, कि कहां अटैक करना है, वेयर टू अटैक? Other I have to go upward, because liver chi already going upward, but then it start going excessively upward. So liver chi might attack on the stomach, might attack on the lungs, लंग पर भी आक्रमण कर सकती है, लंग पर भी आक्रमण कर सकती है, और might go excessively upward, ऊपर जा ही रही है लेकिन और तीव्र गति से जाने लगी, और लिवर ची इज अटैकिंग ऑन द हार्ट, हार्ट पर भी अटैक कर सकती है भाई। तो लिवर ची ने कैसे डिसाइड किया कि कहां अटैक करेगी? लिवर ची ऑलवेज अटैक ऑन द ऑर्गन विच इज वीक, जो कमजोर होगा। जहां पर कमजोरी होगी लिवर ची वहीं पर आक्रमण कर पाएगी। अगर स्टमक कमजोर नहीं है तो लिवर ची का अटैक फालतू जाएगा, कितनी भी स्टैग्नेंट हो जाए। liver chi will be attacking on some organ, suppose liver chi attacking on the uterus, but if uterus is strong then the attack of liver chi is useless, लिवर ची का आक्रमण फालतू का अटैक है। अगर यूटरस मजबूत है ना, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने रुई की बॉल मारी और दीवार से टकरा के नीचे गिर गई। द बॉल ऑफ कॉटन, someone has thrown the ball of cotton on the wall and falling down, there is no effect if the organ is strong. अब आप ये समझिए कि तेज आंधी चली और चारों तरफ आंधी फैल गई, जो दीवार कमजोर होगी वही फट जाए, टूट जाएगी, सब दीवारें नहीं टूटेंगी।
So the storm, if the very heavy storm, will break the weaker wall. It will not able to break the stronger wall. So let's talk about, if the stomach is weak, liver chi will invade stomach. अब स्टमक वीक कैसे होगा? बड़े आसानी से हम अपना स्टमक वीक बड़े आराम से कर सकते हैं. We can weak our stomach very easily with the irregular eating habits, not eating on the right time, doing abnormal type of fasting or starvation. Fasting is very good for human body, we know that. But the person is doing excessive fasting, means unplanned excessive fasting, means then stomach chi get deficient. जो व्यक्ति ज्यादा भूखा रहता है उसकी स्टमक chi कमजोर हो जाती है. I'm not telling the fasting is bad. Fasting is really very good. But sometimes what is happening? We are getting up in the morning and we need something to eat. But we are in the hurry, we are running for office. Then we are reaching in the office. We are feeling very weak. Sometimes we feel dizzy. Then we are hungry. Then we are eating biscuit and tea because we are hungry. So we are not eating right and we are not eating on the time. It will create the deficiency of stomach, weakness of the stomach. Even when we are eating the food, we are watching the WWF fighting, और ऐसी हम कोई चीज कर रहे हैं जो हमारे अंदर एड्रीनलिन का रस बढ़ा रही है. We are watching TV, we are watching the movie which is creating adrenaline rush. हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन कर रही है, तो खाना नहीं पचेगा. खाने को पचाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन जरूरी है. So now there are many causes who can make your stomach chi weaker. If the person is eating too much spicy food, it will also make stomach disturb. Now remember one thing. On the one side there is a stomach, on the other side there is a spleen. Both are opposite. स्प्लीन को ठंडा पसंद नहीं, स्टमक को गर्म पसंद नहीं. Spleen doesn't like ice cream, cold drinks, too much raw salad. If you are eating raw salad after the sunset, or you are eating very late night, spleen doesn't like it. Spleen never like any cold thing. If spleen is weak, it will further weak. On the other side, stomach is opposite. Stomach doesn't like hot thing. Mean too much hot. Person is drinking alcohol without putting the water, or even with water also, or eating too much chili, spicy food, or taking hot thing too much. The thing which is hot in the nature, I'm not telling that we should not eat the hot food. खाना थोड़ा गुनगुना खाना अच्छा होता है, उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाना ठंडा खाना. I'm not telling that you should eat the cold food. I'm telling the nature of food, like lots of spicy food, very hot in the nature. Stomach doesn't like it. It will weaken the stomach. When the person is following a wrong lifestyle and either the stomach is weak or the spleen is weak, then liver chi get chance to attack. अब liver chi आक्रमण करेगी. If stomach is weak, liver chi will attack on the stomach. This is called liver chi contravention over stomach.
Liver chi contravention, invading over stomach. Generally, stomach is sending the food downward. Now suddenly stomach will start sending the food upward. अब stomach खाना ऊपर भेजने लगेगा. Nausea, vomiting, belching, hiccups. Now Bible to the treatment of liver chi stagnation, liver 3, 13, 14, gallbladder 34, pericardium 6, triple wormer 6. So we will remove the liver chi stagnation, but we will also work on stomach. So we'll take the point of the stomach. Like yesterday I told you, CV12, the alarm point of the stomach, and stomach 36, lower hisi point of stomach. इनको टॉन करेंगे और इवन मेथड कर सकते हैं एंड लिवर के पॉइंट्स एडिट करेंगे क्योंकि स्टमक पर तो आक्रमण हुआ है. स्टमक कमजोर था इसीलिए तो आक्रमण हुआ है. तो पहले लिवर के सारे पॉइंट को एडिट किया जाएगा, अंत में हम स्टमक के पॉइंट को टॉन करेंगे. उल्टा नहीं कर सकते कि पहले आपने टॉन कर दिया और बाद में आपको पहले आक्रमणकारी को शांत करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू सबड्यू द liver chi stagnation, then you can work on the stomach, or this is the treatment of nausea, belching. In the same way, when the liver chi attacking on the spleen, अब liver chi ने spleen पर आक्रमण किया. Why? Because person is eating too cold food or eating too much raw salad. I have seen many person, आपने सुना होगा ना बीच में वो कच्चा कच्चा खाने का बहुत वो चल रहा था कि हमें कच्चा खाना खाना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए. सुना है आपने? एनीवन हैज लिसन दैट वी शुड ईट द रॉ फूड, है ना? इट इज गुड, ईटिंग द रॉ फूड इट इज गुड, बट नॉट एज पर आयुर्वेदा. इन द आयुर्वेदा इट्स वेरी क्लियरली रिटन, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नौ, द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर poor digestive fire. Poor digestive fire. So when any patient come to us, when this is patient, this is not the normal person, this is not the normal healthy person. When any patient is coming to you, we should give steamed food. हमें पका हुआ खाना, पका हुआ नहीं, स्टीम्ड वाला, तला हुआ नहीं, पका हुआ स्टीम्ड फूड देना चाहिए. लाइक इफ यू वांट इवन steamed salad or the soup, or we are telling like kanji or moong water, or like lots of soups from made by all the vegetables. Even when we are doing panchakarma of any patient, we never give any raw salad during panchakarma. Raw salad is very good, having many minerals, vitamins, but if the person is patient, that time may not able to digest the food. Okay, even if we give, no problem, but do not give raw things after 4 p.m. शाम को 4 बजे के बाद तो मत दो, because with the sunset, digestive fire further go down. But in the Ayurveda, we don't give. In the naturopathy, definitely there is freedom to give. Okay. Second, there is one more risk. In the raw salad, there are more chances of pathogens. स्टीम्ड में मर जाते हैं, रॉ में किसने काटे. अब आप ठेले पे गए, आपने कहा लो कटे हुए फल दे दो, है ना? In the raw salad, if some pathogen are there, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? So there are very great chances the person will suffer with some bacterial infection which might affect your intestine, E. coli infection or some other infection. The things are very good, no doubt. But when we steam it, we are killing many pathogens.
That's why we don't give an Ayurveda. You see, during the Panchakarma treatment or any Ayurveda doctor giving prescription to anyone, he is giving steamed thing. Okay. Raw thing is good when you cut yourself in your home, when you are following full hygiene and not giving after the sunset. Okay, yeah, we are telling take the banana before sleep. It's good for increasing serotonin level. Yes, that is right. Banana is good if the person is not having kapha. Banana is very good. Okay, it's very good for mood. ये है. Okay, even we are telling many person take the coconut water in the night if you are having blood pressure. If the person taking coconut water in the night, I have seen it is good for blood pressure. But when we talk about the salad, like carrot, है ना, रेडिस, ये जो सलाद होता है ना, गाजर मूली सब जितना सलाद होता है, सलजम, wheat and all, so we should avoid in the evening, but you can give, you steam it, then you give. Okay. So in this way, otherwise what will happen? I was telling many person were taking that diet of raw salad. Many person got magical benefit in the health, there is no doubt. But many persons suffered with the great health problem even after eating raw salad. Because सभी लोग अपने पास तो आते ही हैं, तो we are able to make the judgment. This person is eating raw salad. This person is eating raw food. They are not cooking anything in the home, but still they are very unhealthy. Okay? तो कोई भी चीज हर किसी के लिए applicable नहीं. So person might feel bloating, abdominal distension, right? So when the person is having weakness of the spleen, and if the person is eating too much raw salad or cold drinks, he might further weak the spleen, or the person worry a lot or doing overthinking, they will also weaken the spleen. Then liver chi get chance to attack on his spleen. Then what will happen? Generally, spleen is sending the energy down upward, but now energy will start going downward. What will happen? Bloating, diarrhea. क्या होगा? डायरिया हो जाएगा. Okay. In the same way, if the liver chi attack on the lungs, अगर लिवर chi ने लंग के ऊपर आक्रमण कर दिया, okay, generally lung are sending the fluid downward, liver chi attacking over the lung, then person will suffer with the asthma and breathlessness. उस व्यक्ति को अस्थमा ब्रेथलेसनेस हो जाएगा. Okay. When the liver chi is attacking on the lungs, जब liver chi lung पर आक्रमण कर, the person will be having breathing difficulty, उसे breathing में problem होगी. Okay, so this is the very important example of liver chi. ये हमारे liver chi contravention के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं. गॉट इट? तो लिवर ची कॉन्ट्रावेक्शन जहां भी आक्रमण करेगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. गॉट इट? आई विल गिव यू सम एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. एक बार हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा. ओके, फाइन. Okay, even we have understood this. If it is attacking on the intestine, it will create irritable bowel syndrome. It is attacking on the uterus, it will create painful menstruation or dysmenorrhea.
एंड पीएमएस मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये सारे लक्षण होंगे, ये हम सब समझ चुके हैं। और मैंने आपको जो क्विज दी थी, वो क्विज भी मैंने आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आई हैव गिवन यू क्विज, and I hope you have understood the quiz. Now, suppose you want to do the treatment of stomach. So I told you, do the treatment of liver chi stagnation and at the point of stomach. आप थोड़े से stomach के point add कर दो. In the same way, you want to do the treatment of spleen. अगर आप spleen का treatment करना चाहते हो, again use the point of liver chi stagnation and some point of the spleen. Like the point of spleen are very famous, stomach 36 and the spleen 6. These 2 points are the very famous point of the spleen. Even we can add CB12. With the help of these 3-point combination, we can strengthen the spleen. Why the liver chi has attacked on the spleen? Because spleen is weak. So we will sedate the liver chi. We will calm down the liver chi on the other side. We will tonify CB12, stomach 36, spleen 6. तो हम स्प्लीन को जब मजबूत कर देंगे तो फिर लिवर वापस कभी आक्रमण नहीं कर पाएगा. So I will write down here for clear understanding. Let's see this. So when the liver chi contravention invading stomach, we have added stomach 36 CV12. When liver chi contravention invading spleen, stomach 36 CV12 spleen 6. Okay. When liver chi contravention invading intestine, जब लिवर chi contravention जब intestine को invade करेगा, so we can add stomach 37. Stomach 37, we know stomach 37 is the lower easy point of large intestine. But with that, we will take 1 or 2 more point. That is stomach 25, which is the alarm point of large intestine. And we can also take spleen 6. So with the help of this, we can treat nausea, vomiting, belching. With the help of this, we can treat diarrhea, and more problems. And with the help of this thing, we can treat IBS, irritable bowel syndrome. Or if there is any problem in that. Do you have any question regarding this? Many people are posting something. Yeah, definitely, yes, right. Spleen 4 pericardium 6 also very, very good. Spleen 4 pericardium. Lower EC point. लोअर इसी पॉइंट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था. कुछ चीजें मैंने बताई हैं, ये एक्चुअली टीसीएम का पार्ट है. लोअर इसी पॉइंट वो पॉइंट होते हैं. ओके, आई विल गिव 2 minutes. In 2 minutes you will understand what is lower इसी point. So first understand C means ocean. Ocean means very deep, vast place where we have too deep, too vast water. हम समुद्र उस जगह को कहते हैं. Hisi point are the point. Hisi point are the point who can work on very deep
अगर कोई प्रश्न है आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, अनम्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। हीसी पॉइंट आर द पॉइंट कैन वर्क ऑन द डीप एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम। डीप एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम, वेरी वेरी डीप, उन्हें हीसी पॉइंट कहते हैं। किसी भी मेरिडियन का हीसी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके माध्यम से आप बहुत ही डीप एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम पर वर्क कर सकते हैं। नाउ in the every meridian we are having in the every meridian we are having हीसी पॉइंट। हर मेरिडियन में हीसी पॉइंट है। in the heart meridian we have हीसी पॉइंट, in the lung meridian we have हीसी पॉइंट। सब मेरिडियन के अपने अपने हीसी पॉइंट है। in the lung meridian we have lung 5, in the heart meridian we have heart 3. So all the हीसी point means they can work on the very deeper level of the problem, very very deeper level. Now what is lower हीसी point? So lower हीसी point who are found in the lower body. Lower body means below the knee. लोअर हीसी पॉइंट वो पॉइंट है जो लोअर बॉडी में मीन्स बिलो नी और ऑन द नी, राइट। एंड दे ऑल्सो वर्क वेरी डीपली, वेरी डीपली। दे कैन हील द ऑर्गन वेरी डीपली। हीसी पॉइंट, लोअर हीसी पॉइंट मतलब वो ऑर्गन को हील करते हैं। तो जैसे इफ द पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम द स्टमक ऑर्गन, स्टमक ऑर्गन मीन्स दिस इज द स्टमक ऑर्गन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टमक मेरिडियन ओनली, हम स्टमक ऑर्गन की बात कर रहे हैं। हीसी पॉइंट मेनली वर्क फॉर ऑर्गन रेदर देन मेरिडियन। हीसी पॉइंट मुख्य रूप से ऑर्गन पर काम करते हैं मेरिडियन की बजाय। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरिडियन तो हाथों में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन पेट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन इन द एब्डोमेन। देयर माइट बी मेनी प्रॉब्लम लाइक IBS might be happen in the small intestine and even the large intestine. So when we are making the protocol of IBS, definitely we have to consider small intestine also. So few meridian are having some point they can heal their organ very deeply. Stomach 36 can heal the stomach, so it is called lower हीसी point of stomach. So I have given 4 points, 4 5 points. Stomach 36, stomach 37, stomach 39, and urinary bladder 39. Stomach 36 can heal the stomach. Stomach 37 can heal the large intestine. Stomach 39 can heal the small intestine. And urinary bladder 39 can heal the triple wormer. Triple wormer means upper wormer, middle wormer, lower wormer. Now the person is suffering with the problem of IBS. We can choose LI, SI both. So we can take the lower हीसी point of LI as well as the SI. हम दोनों के पॉइंट ले सकते। ओके, तो समझ में आया कि व्हाट इज लोअर हीसी पॉइंट? इज इट क्लियर? या डेफिनेटली वो लिखा है ना, स्टमक 37 फॉर LI, लार्ज इंटेस्टाइन और द कोलोन, वही मतलब है जो लिखा है, यही इसका मतलब है। अगर लिखा है कि स्टमक 37 फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर हीसी पॉइंट है। ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक। अब हम वापस आ रहे हैं। Here, when the liver is attacking on the spleen, invade on the spleen, person is getting sometime constipation and sometime diarrhea. ये अल्टरनेट होता है।
अगर किसी की स्प्लीन कमजोर है तो डायरिया होगा. If the person is having weakness of the spleen, will be suffering with the diarrhea. If the person is having liver stagnation, it will create constipation. Now, liver stagnation attacking on the spleen, sometime constipation, sometime diarrhea. ये लक्षण है इसका. तो अभी हम थोड़ी देर पहले हम आईबीएस की बात कर रहे थे. आईबीएस में हम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इंक्लूड कर लेंगे. Like I told you, liver chi contravention invading the intestine. Stomach 37 for large intestine. Stomach 25 is the alarm point of the large intestine. We can also include the small intestine, so we can add stomach 39 for the IBS. So what is our protocol? First, the protocol of the liver chi stagnation, then the protocol of the lower EC point of the large intestine and the small intestine. इसका मैं आपको पूरा मतलब अभी आप समझ जाइए, फिर मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा. पीडीएफ में पूरा प्रोटोकॉल भी लिखा होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ liver chi is moving upward excessively. Liver chi moving upward excessively, very fast, very speedily. अब लिवर chi न जाकर सिर पर आक्रमण कर, on the head. Now this person will be having migraine, headache, anger, red eye, migraine, headache, even dizziness. व्यक्ति ने गुस्सा किया और बोलेगा मेरे चक्कर आ रहे हैं. ची इज रशिंग टू द हेड. ची क्या कर रहे हैं? हेड में जाके रश कर रही है. So what we'll do? We will expel the liver chi from head. So we'll add few more point. हम कुछ पॉइंट ऐड करेंगे. Gallbladder 20 and the liver 2 are the very important point. Liver 2 is the sun point of liver, fire point of liver. We are studying it. और gallbladder 20 एक ऐसा पॉइंट है जो सिर में से बिंड को निकालता है. द नेम ऑफ gallbladder 20 इज पूल ऑफ बिंड. अभी मैं आपको दो पॉइंट बता रहा हूं, है ना. पूल ऑफ बिंड, ये बिंड का स्विमिंग पूल है. gallbladder 20, we are putting this point, and we can also add Li4. So 3 point will add if the person is having headache. So what will be your protocol? Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, triple warmer 6, pericardium 6, sedate plus gallbladder 20, liver 2, Li4 sedate. Very good treatment protocol for headache, migraine, dizziness. ये जो तो पॉइंट है, इससे आंखों की रेडनेस चली जाएगी because of the liver 2. Because of the liver 2, redness of the eyes will go. Gallbladder 20 will expel the bind, so headache will go. Li4 is also the point of head region. So this is very good protocol for the patient who is angry and suffering with migraine. जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है और उसके बाद उसे माइग्रेन होता है, तो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप उसका गुस्सा ठीक कर सकते हैं, उसका माइग्रेन ठीक कर सकते हैं. जिन लोगों को टीसीएम के सारे पॉइंट नहीं पता,
उनको थोड़ा सा ये दूसरे एड ऑन पॉइंट्स में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन जिनको टीसीएम की थोड़ी भी नॉलेज है उनको पता है gallbladder 20 is the very good point for expelling the unwanted chi from the head. अब हम बात करते हैं कि जब भी आप स्प्लीन को हम पाचन तंत्र की रानी कहते हैं, द क्वीन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्प्लीन। whenever any digestive organ is weak, stomach is weak, small intestine is weak, large intestine is weak, then spleen will be definitely weak. Because if spleen is strong now, because of spleen is strong, we will see other organ will become strong automatically. Spleen is, we can tell, queen or the king of digestive tract. That's why person is suffering with any type of the digestive problem. We always think for spleen points like spleen 6. So whether the person is having problem, weakness of the stomach, weakness of the spleen, weakness of the small intestine, weakness of the large intestine, we are putting spleen 6. Because spleen is the controller of entire digestive procedure. Got it? अब हमने आपको बताया जब भी किसी भी ऑर्गन को, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको यू हैव टू रिमेंबर 2-3 points. Number 1, you should know the alarm point of all 12 meridian. आपको जितने भी 12 मेरिडियन के अलार्म पॉइंट पता होना चाहिए. We are having 12 meridian. Every meridian having one alarm point. So there are 12 alarm point. In the same way, 12 alarm points are in the front side. Why we are telling the alarm point? If lungs is weak or lungs in the disharmony, so the lung 1, who is the alarm point of lung, will be painful. That's why it's called alarm point. And when we stimulate the lung 1, it will balance the lung. अलार्म पॉइंट का मतलब ये होता है कि अलार्म बज रहा है, कि भाई अलार्म बज रहा है कि लंग में गड़बड़ है. ओके, दैट पॉइंट बिकम टेंडर, दैट पॉइंट बिकम पेनफुल, और यू माइट सी सम स्किन चेंजेस or texture of the skin changes at that area. So body is giving you alarm that lung is weak, do something. That is called alarm point. So whenever any organ is weak now, suppose liver is attacking in any organ and you want to strengthen that organ, you put the alarm. उसका अलार्म पॉइंट स्टिमुलेट कर. आप जैसे किसी भी ऑर्गन का अलार्म पॉइंट स्टिमुलेट करते हो ना, वो ऑर्गन स्ट्रेंथन होने लगता है. क्योंकि प्रश्न आता है ना, चलो स्प्लीन पर आक्रमण तो किया लिवर ने, अब हम स्प्लीन को वापस मजबूत करने के लिए क्या करें? स्प्लीन का अलार्म पॉइंट लगा दो. हार्ट पर आक्रमण किया, हार्ट का अलार्म पॉइंट लगा दो. लंग पर आक्रमण किया, लंग का अलार्म पॉइंट लगा दो. First, we should know alarm point of all the 12 meridians. Second, we should know one alarm point in the back side around the spine, that is called back-shu point. That is also like alarm. If lung is having problem, there will be pain and tenderness on the urinary bladder 13. All the 12 meridian having one back-shu point around, just on the around the spine, on the UB channel, urinary bladder channel. तो हमें क्या पता होना चाहिए? What we should know? We should know the 12 alarm point of all the 12 meridian
12 back-shu point of the all 12 meridian. ये हमें पता होना चाहिए. What is the benefit? Benefit is this: whenever we found, oh, this person is doing lots of overthinking, spleen is weak, take alarm point of the spleen and the back-shu point of the spleen, stimulate it. Spleen will be stronger. Oh, this person is having very bad food habits, not eating on the time, doing unwanted starvation, stomach is weak, take the alarm point of the stomach, back-shu point of the stomach, strengthen it. तो आप उसके अलार्म पॉइंट को उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बैक-शू पॉइंट से. कुछ समझ में नहीं आ तो क्या करो कि कप ले लो, कप, और वी कैन डिवाइड एंटायर स्पाइन इन 3 पार्ट्स. हम पूरी स्पाइन को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं. So the diaphragm, and here we have scapula. यहां पर स्कैपुला है. So entire spine we can divide in 3 parts. Number 1, the part above the scapula. Number 2, part below scapula till the last rib, till rib cage, जहां तक rib cage जाता है. ये rib cage है. This is the second part. First part, second part. And the third part, this part below rib cage, ये पूरा का पूरा 3 पार्ट में बांट दो. And we know the urinary bladder meridian passing from here. यहां से हमारा यूरिनरी ब्लैडर चैनल पास होता है. ये देखिए. So we have divided in 3 parts. If the person is having problem of any organ which in the chest, you do the cupping in this part for chest. Like in the heart is having some problem, in the lung is having some problem, the pericardium having some problem, or any problem above this part, like brain is having some problem, throat is having some problem. Just do the cup, put the cup here for 2 minutes, or do the cupping massage on the UV channel. So these are the back-shu point. ये क्या है हमारे back-shu point. And if the problem below the scapula, like the problem in the liver, gallbladder, spleen, and stomach, put the cup in this area. Do the cupping here. यहाँ पर करो. Especially liver, gallbladder, spleen, and stomach. Suppose stomach is weak, do the cupping here. Spleen is weak, do the cupping here. And if the lower part is having some problem, like urinary bladder, uterus, small intestine, large intestine, prostate, do the cupping in this part. आप कप लगा दो, कपिंग मसाज कर दो, उससे भी बैक-शू पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं. और when, or you can search the accurate point, put the needle, or go in the sujuk, put the magnet. In this way, the back-shu point also can be divided into 3 categories: upper, middle, and lower. So if any organ is weak,
we can stimulate one alarm point who in the front side of the body and one back-shu point who is in the back side of the body. With the help of 2 point, we can strengthen any organ. अब हम तीसरा पॉइंट और बता देते हैं आपको. When we want to strengthen any organ, when we want to balance any organ, because liver is attacking on the organ which is weak. लिवर आक्रमण कर रहा है जो कमजोर है उस पर. So one is alarm point is over. एक हमने अलार्म पॉइंट की बात कर ली, एक हमने बात कर ली बैक-शू पॉइंट की. थर्ड इज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट. इन द ह्यूमन बॉडी वी आर ओनली 8 इन्फ्लुएंशियल. हमारे शरीर में केवल 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होते हैं, बस उनमें से एक चुन लेना है. अब आप बोलोगे कि क्यों चुनना है? 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बहुत गजब के होते हैं. आई विल टेल यू व्हाट इज कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस? Influential point like a minister. Suppose in the human body there are only 8 influential points, but single influential point can work a lot. It is like a 8 minister of the human body. हमारे शरीर के 8 minister हैं. One is a railway minister. From Kashmir to Kanyakumari, if there is any problem happening in the railway track, the responsibility of the railway minister. One is the agriculture minister. Suppose there is a flood or there is no water, so now agriculture minister will do some planning from every part of the India. So these influential points are working in entire body. So there are 8 influential points. तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. मैं फट से नाम लिख देता हूं इन सब. मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको एक चुनने में मदद मिले. So whenever we are suffering with any problem, so we are talking about the 8 influential point. 8 influential point. Whenever we are having problem with any yin organ, हमारे किसी भी yin organ में problem हो, we are having 6 yin organ. Or whenever we are having problem with any yang organ, we are having 6 yang organ. Only one influential point can balance all the yin organ, and only one influential point can balance all the yang organ. Liver 13 is that much powerful. Liver 13 एक इतना पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है जो अकेला पूरे यिन को बैलेंस कर सकता है. इसलिए हमने लिवर ची स्टैग्नेशन के प्रोटोकॉल में इसका प्रयोग किया है. बिकॉज लिवर 13 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल यिन ऑर्गन. ये अकेला लिवर का नहीं है, सबका है. दिस इज द मिनिस्टर ऑफ ऑल यिन ऑर्गन. If any yin organ is having problem, we can treat liver 13. In the same way, CV12, conception vessel 12, is the influential point of all yang organ. हमारा जो CV12 है, CV12 is the influential point of all yang organ. अब चाहे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो,
चाहे ट्रिपल वॉर्मर की प्रॉब्लम हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन इज हैविंग प्रॉब्लम, stomach meridian is having problem. CB12 is the influential point of all yang meridian. If the person is having problem of any muscle or tendon or nerve, gallbladder 34, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी मसल में प्रॉब्लम, टेंडन की बात हो, उसका मिनिस्टर है gallbladder 34. You put the gallbladder 34, then you will able to make a then you able to strengthen all the tendon, all the muscles. अब मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. If there is any problem in the chest region, any problem is happening in the chest region, so the influential point of the chest and chi is CB17, CB17. ये हमारे दोनों निपल्स के बीच में होता है पॉइंट. CB17 is the influential point of all the chest problem. Now, if you want to treat the lung, you want to treat the heart, you want to treat the pericardium, you want to treat the chest, this is called the influential point of chi and chest. You want to work on chi, you want to work on energy, influential point of CB17. Now, the influential point of blood is urinary bladder 17. It's a very, very important. याद रखिएगा, इसकी लोकेशन तो एक अलग बात है, लेकिन याद रखिए पॉइंट. अब आप बोलोगे क्यों याद रखें? याद रखना इसलिए जरूरी है इस पॉइंट को, क्योंकि जितने भी ट्यूमर होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें हम बोलते हैं ब्लड स्टेसिस. फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, गांठें, नोड्यूल, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है, ये जितनी भी चीजें होती है ना, इन सबको हम कहते हैं ब्लड स्टेसिस. और any type of the blood problem, we will use UB17. In the future, you will see we are going to use UB17 again and again in many protocols. That time I will tell you only one thing. I am taking UB17 because it is the influential point of blood. Can I take in anemia? Yes, because we are taking in the blood deficiency. Can I take in the uterine fibroid? Yes, because that is blood stasis. Got it? टॉन सेडेट का क्वेश्चन नेक्स्ट है. जनरली सेडेट करते हैं, लेकिन ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो हम टॉन करते हैं. लेकिन अगर if there is a blood stasis, definitely will sedate. Most of the time, you're talking about the blood stasis, we sedate. Now, I talked about the CB17. CB17 point found in between nipples here. If the person is having tightness in the chest, breathlessness, stagnation of the chi, we will use CB17. CB17 is a very good point for chest region. तो हमने समझा सभी यिन का लिवर 13, सभी यांग का CB12, चेस्ट का CB17, ब्लड का UB17. Now blood vessels. If there is any type of the problem of any blood vessels in the human body, lung 9, we take lung 9. During the COVID-19, COVID-19, person were getting the problem of lungs, but also were getting blockage in the blood vessels. Do you know that? आपको पता है कि जिनको COVID-19 हो रहा था,
तो पैथोजेनिक इफेक्ट से उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर नैरोइंग भी हो रही थी। तो अगर आप कोविड-19 का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे उसमें डॉक्टर एस्पिरिन भी देते थे, खून पतला करने की दवाई भी देते थे, है ना। या क्योंकि तो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल था ना चाइना का, उसमें लंग 9 भी था। लंग 9 वाज देयर इन द कोविड-19 प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ blood vessels. If you want to treat any blood vessels problem like varicose veins, like Raynaud's disease, like atherosclerosis, blood pressure, narrowing of the blood pressure, hardening of the blood vessels, some rupture of the blood vessels. The influential point of all the blood vessels is lung 9. ये वही है जहां पर हम नाड़ी चेक करते हैं, ये वाला lung 9. Lung 9 is the point of all blood vessels. We can't tell this is the blood thinner point. Lung 9 is not the point of blood. Blood का point तो UV17 है. Lung 9 is the point of blood vessels. देखो पाइपलाइन अलग होती है और पाइपलाइन के अंदर बहने वाला पानी अलग होता है ना, दोनों चीजें अलग हैं। तो ब्लड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट UV17 है, लेकिन जो ब्लड वेसल से जो पाइपलाइन है उसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है लंग 9। कहते हैं ना कि अरे अभी बीपी बढ़ गया, उम्र हो गई, बीपी बढ़ गया, क्योंकि उम्र होती है तो जो ब्लड वेसल्स है ना हार्ड हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कई साल हो जाते हैं तो गैस की पाइपलाइन हार्ड हो जाती है, तो वो आते हैं और वो जो रिपेयरिंग करने वाले वो गैस की पाइपलाइन निकालते हैं, ऐसी पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। सो द गैस पाइपलाइन बिकम वेरी हार्ड, so they are removing it and putting new flexible pipeline. So generally our blood vessels are very flexible because they are made by elastin collagen fiber, but with the age it become very hard. So when we want to treat that hard blood vessels, we can work on lung 9. हम तब किसका प्रयोग करते हैं? हम lung 9 का प्रयोग करते हैं. So lung 9 is a very good point. Now urinary bladder 11 हमारा एकदम स्पाइन के ऊपर होता है। UB11 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल द बोन्स। जो हमारा UB11 है, UB11 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल बोन्स। अब आप समझिए, we are treating lots of bone problem, we are treating lots of like degenerative problem, arthritis problem. Whenever you are planning to treat any bone problem, you can think for UB11, and I will tell you. So this is the bone. So for the bone, we are treating UB11, and inside the bone, we are having bone marrow. Bone marrow is the factory of blood cells. Bone marrow is making RBC, WBC, platelet, bone marrow. The influential point of the bone marrow is gallbladder 39. तो जब हम gallbladder 39 को स्टिमुलेट करते हैं, we can work on the bone marrow. So in this way, we have seen liver 13, CV12, CV17, UB17, lung 9, gallbladder 34. What else? Gallbladder 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक कौन सा रह गया? लंग कौन सा छूटा? Which one? UB11. So UB11 for bone, gallbladder 39 for bone marrow. This is for tendon, muscle. This is for blood vessels. So UB11 for bone, gallbladder 39 for bone marrow, gallbladder 34 for tendon muscle, lung 9 for blood vessels, UB17 for blood
CB17 for chest and chi. CB12 for all yang organ, all yang meridian. Liver 13 is all yin meridian. Now remember these influential points. Now we are coming to the contravention of chi. अब बड़ा आसान काम हो गया. चलिए हमने 3 चीजें. अब हम जब भी हम प्रोटोकॉल का निर्माण करेंगे, in the one box we will keep this in the one box. If needed, we will take 1 point. In the another box, we will take stomach 36, stomach 37, stomach 39, and UV 39, stomach, large intestine, small intestine, and triple wormer. In the third box, third and fourth box, we will take alarm point and back-shu point. अगर आपने इनमें से 2 भी पॉइंट लगा दिए तो ऑर्गन स्ट्रेंथन हो जाएगा. Means if you are putting the alarm point of any meridian, if you are putting the back-shu point of the any meridian, if you are putting the influential point of any meridian, or you are putting the lower EC point of any meridian, you will strengthen the organ. फिर उसे पर लिवर chi आक्रमण नहीं कर पाएगा. Then liver chi will not able to attack. Got it? So we should know now how to strengthen any organ. हम किसी भी organ को किस तरह से strengthen करें so that we can prevent the attack of liver chi. Yes? Is it clear? तो मैंने आपको एक PDF दिया था. I will show the last page of the PDF, which is very important for you. ये देखिए. So we have discussed this. What is the chi stagnation? Causes of the chi stagnation. Then sign of the chi stagnation. Then we have discussed these all things. 5 types of the chi stagnation. Then we have discussed how the liver chi stagnation create multiple diseases. So this is the basic protocol, master protocol. We have to definitely use this protocol. And what is written here? Now we will be adding some add-on point for a specific problem. But do not miss our master formula, which is needed first. Then we can do add-on point. यानी add-on point का मतलब ये नहीं आपने सिर्फ add-on ही लगा दिया. मास्टर फॉर्मूला तो पहले आएगा. अगर किसी को फैटी लिवर है ना तो मास्टर फॉर्मूला ही काफी है. फैटी लिवर तो मास्टर फॉर्मूला से ही चला जाएगा. फैटी लिवर का मतलब ही होता है लिवर chi stagnation. Got it? Now, if the person is having the problem with the chest and the hypochondria, first believe master formula, then we'll add RAN 17. RAN 17 is the influential point of chest and lung 1 is the alarm point of lung. ये आपका होमवर्क भी आ जाए. आप लोग क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए
12 alarm point of 12 meridian and the 12 back-shu point of the meridian, और उसकी लिस्ट बना के फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाली है. And if you have any doubt regarding the alarm point of the back-shu point, you can ask. रैन और सीबी एक ही बात है. रैन को सीबी कहते हैं, सीबी को रैन कहते हैं. तो देखो फॉर्मूला, if the chi is getting stuck in the chest, then we are opening the chest by CB17, and lung 1 is the alarm point of the lung which is available in the chest. तो हमारा लेकिन पहले तो मास्टर फॉर्मूला आएगा. The first there will be master formula, then we will be adding this formula. These 2 more point. Then throat or the plum pit chi, गले में कुछ फंसा हुआ लग रहा है. First will be master formula. Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, pericardium 6, triple bowel 6, sedate. Then we'll add CB22 and stomach 40. CB22 is the very good point. This is the CB22, depression. Very good point. Even we press it, it's a very good, because person is feeling of lump in the throat. और स्टमक 40 फ्लेम को निकालता है. तो जब किसी को लगे कि गला घोटने वाली फीलिंग हो रही है, गले में कुछ फंस रहा है, तो आप ये 2 पॉइंट ऐड कर दो. मास्टर फॉर्मूला प्लस दिस एड ऑन पॉइंट. Now the problem with the mind and emotion like depression or melancholy, बहुत दुखी होना, mood swings, irritability, add Buddha triangle and yin tang point. Yin tang point means third eye point. So here we can see heart 7. Heart 7 will calm the mind. Pericardium 6 will balance the emotions. And use the yin tang point here. So if the person is having very depressed and not very unrelaxed, irritability, you want to treat this. Liver 3, 13, 14, gallbladder 34, pericardium 6, triple bowel 6, yin tang, heart 7. Pericardium 6 तो आ ही गया. Yin tang point, the point between the eyebrows, from here if you go half chin above, that is yin tang. So go on the midpoint of the eyebrow. Now from this point go half chin above. This is the yin tang. यहाँ पर चंदन लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा मन शांत रहे. So this is the protocol for mind and emotions. Then stomach, liver attacking on the stomach, nausea, vomiting, acid reflux, belching. So first the formula of the liver chi stagnation, then we'll add stomach 36, CB12, CB30. Okay. Spleen. When the liver attacking on the spleen, person is having sometime constipation, sometime diarrhea, bloating, loose stool. So first formula of liver chi stagnation, then strengthen the spleen by spleen 6, stomach 36, and RAN 6, RAN 12 or CB6, CB12. ये सारे add-on points हैं. Or the liver chi stagnation attacking on the intestine, then we can add the point of the intestine. आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं. लाइक इसमें हमने लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट ऐड किया, आप स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ऐड कर सकते हैं. You can add the stomach 39. Uterus. So the female is having PMS, or the premenstrual syndrome, or the painful period, or the irregular cycle, or the tenderness in the breast, irritability, anger, all the sign of the liver chi stagnation present. First is the master formula. After that, because premenstrual syndrome, period blood के साथ, पेन के साथ आ रहा है, यानी मानो कि there is a problem connected with the blood. So here taken the spleen 6 is the gynecological point as per TCM. We can add these add-on point.
If there is a tenderness in the breast, we have taken some local point around the breast. इसे कहते हैं stomach 18, the point of the root of the breast. आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा और बाकी पॉइंट हमारे ऑलरेडी हैं. Only we have added the point on the root of the breast. अभी मैं एक ही पॉइंट की लोकेशन नहीं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा. तो ब्रेस्ट की टेंडरनेस कम हो जाएगी, इसके बारे में हम बता चुके हैं. तो इस तरह से हम एड ऑन पॉइंट को जब भी ऐड करते हैं तो इसी के बेस पर हमने आपको क्विज दी थी. अब आप एक बार और क्विज खुद करके देखिएगा, मैं उसके आंसर भी पोस्ट कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. एनी क्वेश्चन? Put in the chat box if any question. I will give PDF, don't worry. CV22 can be put in the sujok? No problem. Polycystic ovary is also the condition of liver. It is not the condition of contravention. Polycystic ovary, we can tell the combination of liver cheese stagnation and liver blood stasis. लेकिन इस चैप्टर में नहीं है वो जो भी हम पढ़ रहे हैं. When the liver is attacking on some organ, liver is attacking on that particular organ because that organ is weak. In that condition, we can tonify that organ. So first sedate the point of the liver, then tone the points of that organ. लोकेशन बताने के लिए मुझे आपकी एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी. अभी इसमें लोकेशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट है. मैं आपको लोकेशन बता दूं. हाई बीपी हमारा लिवर यंग राइजिंग और लिवर फायर में आएगा, उसमें हम समझेंगे. We have to apply entire protocol together, which is the liver cheese stagnation plus add-on point. अलग अलग नहीं करना है, पूरा प्रोटोकॉल एक साथ लगाना है. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. We can do one thing. There are 6 points in the liver cheese stagnation protocol. We can reduce 1 or 2 points from the liver cheese stagnation protocol. But we have, and we can do the add-on point, but we have to put the entire protocol together. No, alarm point always mean weakness. No, no, no. If any disturbance in the organ, any type of the disturbances in the organ, whether excessive, deficient, it will reflect in the alarm point. अलार्म पॉइंट का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है. जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो उसका अलार्म बज जाता है. ऐसे अलार्म पॉइंट आर गिविंग सिग्नल whenever there is any problem with the particular meridian, deficient, excessive, any condition. When we are doing the needling, we can needle for 30 minutes and we can call the patient alternately. Don't do the treatment every day. Otherwise, patient will feel weakness after multiple treatments. Sometimes patient is coming from the far distance. That time definitely you can treat for 3-4 days regularly, because after that you are going to give big break. But if the patient is living in your city, then avoid giving treatment every day. Give the break minimum for 1 day, and after 10 to 12 sittings, give big break like 7 days or 10 days.
Whether you do the treatment with a needle or you do the treatment with the buell magnets, all will work. Those who are the student of postgraduate diploma, for them we are going to learn meridian separately, all the 12 meridian. Till that time, you might feel some difficulty because there are lots of points, liver 13, liver 14. You might feel a little difficulty where these points are located, but I will take your separate class on the meridians. Very good, wonderful, very nice. Good, good. Sadavali, wonderful. Liver chain stagnation protocol is very, very effective if your location is correct. Okay. So thank you so much, everyone. If anyone feeling any type of the difficulty to understand something, you can message me personally or in the group so that I can understand what type of difficulty anyone is facing. I get some message every day, so I understood. I am able to understanding that what difficulty anyone can get, right? Sometimes we are discussing this topic multiple times now. Sometimes we are going very fast until someone tell, okay, calm down. Okay. तो किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी हो रही है समझने में, आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं। अगर कोई कहीं पर अटक रहा है कि समझ में आ रहा है लेकिन इस पॉइंट पर हम अटक रहे हैं, वो अपनी डिफिकल्टी मुझे बता सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान टू डू समथिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो अलार्म पॉइंट, बैक-शू पॉइंट, ये सब हम इसमें पैटर्न में तो नहीं समझेंगे, है ना। फिर भी आप मुझे व्हाट्सअप करेगा जहां मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, वो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, सो लेट्स क्लोज द सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हमारी अगली क्लास मंडे को होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कोई क्विज चाहिए रात को कि आज आराम करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू हैव वन क्विज टुनाइट? यस, okay, I will give you quiz of 10 questions, okay, on the basis what we discussed today. Okay, fine, good night, see you tomorrow. See you not tomorrow, see you in the next class on Monday.